you can't see these waves, क्योंकि below क्या है, water is there. So these waves are not visible in the deep ocean. These waves are not visible in the this is the reason, if I am talking about this is, I said that micro Burma plate, and the new plate has been found, not minor, micro, which I said that, and this region has been uplifted. This region has been uplifted, and the scientists come to know about new plate, micro Burma plate, and it has been uplifted up to this, और this is in Sumatra, और आपको पता है this is in Java Trench and Sunda Trench. Yes. याद है ना आप लोगों को oceanic formation of Andaman Nicobar and Indonesian archipelago. Yes, and the reason it has been uplifted 2004. Understood it? Next point that I am going to see, velocity. Velocity is directly, आपने कभी पढ़ा 9th and 10th में, velocity is equal to nu lambda. Have you read? Have you read or not? चलो अच्छा पढ़ा. If the frequency is supposed to be constant, not too much variable, can I say that velocity is directly proportional to lambda? Velocity is directly proportional to lambda or not? Lambda means wavelength, and wavelength किसको कहा जाता है? Wavelength किसको कहते हैं? Distance between two consecutive crest or distance between two consecutive troughs. कैसे कहोगे? Yes, tell me. This is 1/4. ये सर्कल का कितना पार्ट है? Tell me. 1/4. This is the 1/2, and this is 1/4. So it is 1/4, half, 1/4. It will become 1. So it become one wave, no? Yes or no? So from the two troughs, consecutive two traces. So I said that what is the speed? Tell me, what is the speed? 700 to 800 km per hour. इसका मतलब wavelength will be also very high. Yes or not? So in the deep ocean, so I said that if I said that sea seismic wave has high wavelength in the what? Deep ocean. Understood? ये high wavelength. Understood it? And what is the wavelength? It is around 150 kilometers. What is the wavelength around? How much is the wavelength? तुम खुद सोचो यार, this much. Wow. And ये पानी ऐसा है, yeah. So there will be, I said that, और ये आप ये नहीं समझ रहे हैं कि इसके बाद ये पहला वेव उठा है, बट इसके बाद इसके नीचे वाला वेव भी आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या बता रहा हूं, एक पानी नहीं उठा है, कितनी पानी उठी है? कई लेयर ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ वाटर, एक लेयर उठा है या डिफरेंट लेयर हैज बीन अफेक्टेड. अब ये उठ गया, इसके मतलब आपने फोर्स दिया, तो सडनली दिस हैज बीन अफेक्टेड कंप्लीटली, एंड देन ट्राइंग टू बैलेंस इट. तो ये पानी इसके बाद इसके this one, then there is a series of wave will originate, it will come to the coast. Only one wave will come, a series of. Getting my point? And so there is a seismic wave has how much? High wavelength in the deep ocean, 150 kilometer, and its speed is around, I said that, yes, tell me, 700 to 800 km per hour. Is it okay? Now, but when this wave comes near to the coast, they used to strike with this, they become what is a shallow sea. They have a very high wavelength. Na? So coming before the sea, what will happen? The shallow depth of the sea make it the break of this wave. Yes or not? ब्रेक करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा?
एंड पहले आपको कोस्टल लैंडफॉर्म में तो पानी क्या करेगा, इट विल अपलिफ्ट लाइक दिस, ब्रेक नहीं, ट्राई टू ब्रेक। याद है ना कोस्टल लैंडफॉर्म में द फर्स्ट स्टार्टेड स्पिलिंग लाइक दिस एंड देन फर्स्ट स्टार्टेड व्हाट, स्पिलिंग। अब ये पानी ध्यान से देखो, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर चला गया। लिसन मी केयरफुली, दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज गॉन अप। कहां से गया, फ्रॉम हियर, सडनली यहां से ओशियन का वाटर निकल जाएगा, टेल मी। And suddenly the coastal people, where the sea water has gone. For the first time and the last time, they are able to see near to the coast sea water, and some kind of fishes and then now they are not knowing there is something is going to come. And thereafter, what will happen? It will spill and then break and then in the coastal region causes what? तो ये क्या हुआ, स्पीड ऑफ वेव से क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट, नियर टू द कोस्ट शैलो डेप्थ, एंड शैलो डेप्थ से क्या हुआ, इस स्पिलिंग ऑफ वेव, एंड आई सेड दैट यस, टेल मी, ब्रेकिंग ऑफ वेव, फाइनल स्पिलिंग। स्पिलिंग समझते हैं, टूटेगा नहीं अभी, बट कोस्ट में जब पूरा टूटने लग जाता है, सर्फिंग, स्पिलिंग ऑफ द वेव। लेकिन जब ये स्पिलिंग ऑफ द वेव हो रहा था, तो टेल मी व्हाट इज हैपनिंग, टेल मी फास्ट, यस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग, वेव लेंथ बढ़ रहा था या डिक्रीज हो रहा था, टेल मी, डिक्रीजिंग, यस और नॉट, वेव लेंथ इज डिक्रीजिंग। अरे वेवलेंथ नीचे कोस्ट पे जाते जाते क्या हो जाएगा, स्टार्टेड डिक्रीजिंग और नॉट, ड्यू टू द, इफ इट विल ब्रेक तो इसकी वेव क्या होगी, छोटी हो गई है, यस, एंड व्हेन द वेवलेंथ डिक्रीजिंग मींस स्पीड इज, yes or not, and if speed is decreasing means what, kinetic energy is डिक्रीजिंग, होगा कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू मास एंड हाफ मास इंटू, यस, इट विल डिक्रीज और नॉट, बट वी नो दैट देयर इज एन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यदि काइनेटिक एनर्जी पहले जो ज्यादा था दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, मतलब कि इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर, but it can be transformed from one form to another. So when it is coming near to the coast, what happened? Where due to shallow depth, what happened? Spilling, breaking, then wavelength is decreasing, and then speed is decreasing, and then kinetic energy. Shall I remove this? But what is happening? Tell me. But conservation of energy led to increase in potential energy. Therefore, amplitude of the wave start increasing. Therefore, amplitude of the wave start increasing. Yes or not? Suppose I said that आर्मी मैन को आपने देखा हो क्या करते हैं, इन द ब्रिज में दे आर सेइंग दैट डू नॉट पुट योर फुट टुगेदर, सो एवरीवन इज पुटिंग, तो सभी लोग पुट करेंगे, देयर इज अ फोर्स्ड वाइब्रेशन विल बी देयर, and an amplitude, one amplitude, another amplitude get together, it will be a very high, and that can lead to the destruction of what, breach. तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, तो one it is an amplitude of the wave started decreasing, another, but there is a series of wave, and the series of wave help in what is an increasing the amplitude of the wave further more. Yes or not? Series of seismic wave giving, this is not the only amplitude, यही एक amplitude नहीं है, it can go up to the 10 meter, it can go up to the 15 meter.
further, क्या बोलूंगा मैं? Superimpose amplitude of the wave, series of seismic wave causes what? Amplitude of the wave, superimposition of what? Series, further superimpose of series of seismic wave help in increasing more amplitude or height of sea wave along the coast. Clear? So कैसे एम्पलीट्यूड कैसे इंक्रीज कर रहा है? फर्स्ट इट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, एंड द सेकंड इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ व्हाट? Superimposition. Yes or no? And it is causing disaster along the coast. So हमने ये किसके थ्रू समझाया? प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू समझाया ना? I have made you to understand through the which? प्लेट टेक्टोनिक. समझ में आ गया? So which fault will cause tsunami? Reverse thrust, strike slip fault. कौन सा fault? Normal fault? No. Normal fault से नीचे जाता है hanging valley. Understood it? Now what are the causes of tsunami? Tsunami के क्या causes हैं? First it is plate tectonic. First it is तो मैं क्या बोलूंगा जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है? द प्लेट टेक्टोनिक लाइक ओशन कन्वर्जेंस, पहले मैंने बोल दिया, जो बोल दिया वही बोलने जाना है. ओशन कन्वर्जेंस एंड oceanic continental convergence that can lead to what is a reverse of thrust fault along the subduction zone. Understood? And that uplift the water from the given depth. And then we know that the speed of sea seismic wave is directly proportional to the sea under root GH. इसका मतलब it is directly proportional to the what? Yes, depth. Under root of what? Depth of the ocean. Yes. You know? And that has created a large high wavelength sea seismic wave in the deep ocean, which is not visible with the high speed. And this speed reaches up to what is 700 to 800 km per hour. And when it is reaches near to the coast, then due to shallow coast, the wavelength has found what is an obstruction. And therefore this wave started spilling and breaking. And due to breaking and spilling, the wavelength of the sea seismic wave reduces. And when it reduces, automatically, as per the conservation of kinetic energy, it is converting into more potential energy. And then potential energy is mishelping in the increasing the amplitude of the what? Sea seismic wave. And at the same time, but the series of sea seismic waves helping in superimposition and increasing in what? Further amplitude, and can reach to the height of 10 to 15 meter and causes high level of destruction along the coast. Understood? And in 2004, I said that, simply वैसे बोलोगे, Indo-Australian, I said that, which I said that? In 2004, Indo-Australian oceanic plate what? Subducted below Eurasian oceanic. During the subduction, one micro Burma plate has been broken of a length around 200 km by what is 10 to 15 meter, and that has converted into what is tsunami wave. Simple.
फिर थोड़ी बोलोगे वो क्या. Understood? Converted into, and it has affected which are the continents, which are the countries. ये आपको दिख रहा है ना. पहले स्पिनिंग होने लगा, हाइट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, एंड देन दे स्टार्टेड व्हाट, ब्रेकिंग. So which are the country affected by the tsunami wave in 2004? Find out the country name by saying this. Indonesia. और इधर देख लो, Malaysia. Okay, this portion is what? Thailand. Then this is Myanmar, Bangladesh, India, Sri Lanka, Maldives, and even it is able to reach Ethiopia. But even then it is able to reach Kerala. Kerala is not in the direct. लेकिन आपको पता है ना कि लाइट एनर्जी यूज्ड टू बेंड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये वेव ऐसे आया एंड यहाँ से बेंड हुआ, एंड देन केरला हैज बीन आल्सो, दिस कोस्ट हैज बीन अफेक्टेड, बट एट द सेम टाइम द केरला कोस्ट हैज बीन आल्सो अफेक्टेड. अंडरस्टूड इट? गॉट इट? सो विच आर द कंट्री अफेक्टेड बाय इट? इंडोनेशिया. फर्स्ट जहाँ हुआ वहां तो होगा ही, इंडोनेशिया. एंड जस्ट यहाँ देखेंगे, दिस इज मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, इथियोपिया. सोमालिया, इथियोपिया नहीं यार, दिस इज सोमालिया, मैं इथियोपिया बोल रहा हूँ. इथियोपिया इज दिस, सोमालिया. चलो, got it?